Okay, good morning everybody. It's lecture time now. In my lecture today, I'm going to discuss some MCQs जो आपको दिए नहीं है. मैं आपको एक एक करके लिखवाते ही जाऊंगा क्योंकि it would be difficult for you to look into the screen, understand the lecture and write it out. तो अभी लिखते जाओ और फिर हम उसके एक एक कंसेप्ट को डिस्कस करेंगे. उसमें से भी you are going to learn lot many things. बिल्स ऑफ एक्सचेंज के एमसीक्यूज आज मैं डिस्कस करने वाला हूं आप सबके साथ में पहले पार्ट में. दूसरे पार्ट का वी विल डिस्कस लेटर ऑन. एमसीक्यू नंबर 1 टुडे. On 1st Jan 2005, X draws a bill on Y for rupees 20,000 for 3 months. The due date of the bill will be on dash. The question I have also put up on the chat part under the name called as Utkarsha. मैंने उसके यहाँ से लॉगिन किया हुआ है. Can you help me to find out the due date of the bill? फर्स्ट जैन में 3 months ऐड किया तो हो गया 1st April प्लस 3 days ऑफ ग्रेस ऐड करो उसके अंदर तो द आंसर वुड बी 4th April 2005. दूसरा क्वेश्चन आपके सामने. On 15th August 2005, X draws a bill on Y for rupees 20,000 for 3 months. 18th November was a sudden holiday. Due date of the bill will be. करो calculate. August 15th August के अंदर 3 months ऐड किया तो सितंबर अक्टूबर नवंबर. नवंबर 15th November 2005 plus 3 days of grace 18th November. एक्चुअल ड्यू डेट आना चाहिए 18th November. But 18th November was a sudden holiday. Due date of the bill will be. Due date of the bill will be 17th November. That is wrong answer. 17th November is a wrong answer. The answer would be 19th November. 19th November is a correct answer. Remember that as per the rules, if there is sudden holiday, ये नया रूल आपको सीखने मिल रहा है. If there is sudden holiday or we can say emergency holiday declared, then the due date shall be calculated on the next day of the holiday. मतलब 18th November was the holiday. So it should be 19th November.
अभी जैसे अपना 2020 का एग्जांपल लो, 2020 में अगर कोई बिल का ड्यू डेट 22 मार्च 2020 आया रहता, तो 22 मार्च 2020 को गवर्नमेंट ने लॉकडाउन अनाउंस किया था. हाउ मेनी डेज लॉकडाउन इट वाज अनाउंस? हाउ मेनी डेज लॉकडाउन अनाउंस? फर्स्ट वाला 1 डे. ओके, वो दैट वाज पब्लिक जनता कर्फ्यू था. बाद में 23 मार्च से गवर्नमेंट ने लॉकडाउन अनाउंस कर दिया फॉर 1 मंथ. तो अगर कोई बिल 22 मार्च को ड्यू हो रहा था, तो उसका ड्यू डेट लॉकडाउन के बाद का आ जाएगा. आर यू गेटिंग दैट लॉजिक? बिकॉज इट वाज अ सडन इमरजेंसी हॉलीडे डिक्लेयर्ड बाय द गवर्नमेंट. थर्ड क्वेश्चन. On 16th June 2005, X draws a bill on Y for rupees 25,000 for 30 days. 19th July is a public holiday. Due date of the bill will be. तो 16th जून के अंदर 30 डेज ऐड किया तो 46 हो गया. 16 प्लस 30 46 माइनस 30 डेज ऑफ जून, 16th बच गया. 16th जुलाई plus 3 days of grace, 19th July. But 19th July is a public holiday. Therefore, the due date will be 1 day before the due date. 18th July. कोई डाउट इसके अंदर? X draws a bill on Y. X endorses the bill to Z. The payee of the bill will be. Payee is the person to whom finally the amount of bill will be paid. So in case of endorsement, the money will be paid to the endorsee. So Z is the endorsee, Z is payee. On 1st Jan 2005, X draws a bill on Y for rupees 50,000 for 3 months. X got the bill discounted on 4th April 2005 at 12% rate. The amount of discounted bill will be. The question should be made correct. It is 50,000. The amount of discounted bill will be. अभी वो कौन से डेट को किया हमको पता नहीं. डिस्काउंटेड बिल का अमाउंट कितना था? 50,000. सिंपल. अभी इसको मैं चेंज करूं, अमाउंट ऑफ डिस्काउंट विल बी. अमाउंट ऑफ डिस्काउंट विल बी 0, क्योंकि ड्यू डेट पे बिल डिस्काउंट होगा नहीं. द बिल वॉज डिस्काउंटेड ऑन द ड्यू डेट. नेक्स्ट.
On 1st Jan 2006, X draws a bill on Y for rupees 30,000. मैंने वो रफ पैड for 3 months. X got the bill discounted on 4th February 2006 at 12% rate. The amount of discount will be करो 30,000 into 12 divided by 100 into 2 divided by 12. See, the amount of discounted bill will be 29,400. Very correct. 2 months के discounted के बाद में discounted bill का value रहेगा 29,400 and discount का amount रहेगा 600. A bill of 12,000 was discounted by A with a banker for 11,800. At the maturity, the bill returned dishonored, noting charges rupees 20. How much amount will the bank deduct from A's bank balance at the time of such dishonor? Bank will deduct the entire bill amount plus noting charges 12020. अभी ये एग्जाम्पल नंबर कौन सा चलेगा अपना? Which is this example number? Tell me please. 8 है. तो मैं क्या कर रहा हूं, इसका एक वर्ड फाइल भी बनाते जा रहा हूं. ये क्वेश्चंस मैं आपके साथ शेयर कर दूंगा ग्रुप में. डोंट राइट द क्वेश्चन. अभी 8 नंबर से मेरे पास मैं क्वेश्चन आपके लिए रख दूंगा. ओके. तो X sold the goods to Y for rupees 1 lakh. Y paid cash 30,000. X will grant 2% discount on the balance. And Y request X to draw a bill for the balance for the amount for balance. The amount of bill will be 70,000 minus 2%, 68,600. Do you get that? Next. On 1st Jan 2005, X draws a bill on Y for rupees 15,000
for 3 months. At maturity, Y requested X to accept 5,000 in cash and balance to draw a fresh bill for 2 months together with 12% per annum interest. Amount of interest would be, देखो 15,000 में से उसने 5,000 पे किया तो 10,000 बैलेंस है, उसके ऊपर 12% interest for 2 months. So you get is 200 rupees. Do you get that? Okay. Next. करो calculate. On 1st August 2005, X draws a bill on Y for 30 days after sight. The date of acceptance is 8th August. Due date of the bill will be, so 8 plus 30, 38 minus 31, 7th September plus 3 days of grace, 10th September. Tenth September आंसर है उसका. Have you got that? Question number 11, right? Question number 11. On 1st June 2005, X draws a bill on Y for rupees 25,000. At maturity, Y requested X to accept 5,000 in cash and noting charges incurred rupees 100. And the balance X draws a bill on Y for 2 months at 12% interest. Amount will be, interest amount will be, interest amount will be 20,000 ka 12%, 2,400. I got is 400 rupees amount. Do you get that? Hey, 4,000 वाला कौन है रे? भूमिका, typing mistake. Next. पढ़ाई के लिए मेहनत तो सब करते हैं, लेकिन स्मार्ट स्टडी कौन करता है? प्री एग्जाम ऐप के साथ बनाइए अपनी तैयारी सुपर स्मार्ट। प्री एग्जाम ऐप देता है वाइड रेंज के एग्जाम्स की तैयारी, जैसे जी, नीट, कैट, सीए फाउंडेशन, सीएस सीट, बैंकिंग, रेलवे, एसएससी, एमबीए एंट्रेंस, एसवाईजेसी, कॉम, टीवाईबी कॉम और भी बहुत कुछ। चैप्टर वाइज टेस्ट्स एंड मॉक टेस्ट्स, डिटेल्ड परफॉर्मेंस एनालिसिस, और अब तैयारी होगी एकदम परफेक्ट। कहीं भी कभी भी पढ़ाई करें और एक विशाल क्वेश्चन बैंक आपकी तैयारी को बनाए आसान। इंस्टेंट इवैल्यूएशन से तुरंत जानिए अपनी परफॉर्मेंस और पाएं पर्सनलाइज्ड फीडबैक। तो अब देरी किस बात की? प्री एग्जाम ऐप डाउनलोड करें और अपने नाम से रजिस्टर्ड करें और एक विशाल क्वेश्चन बैंक बिल्कुल फ्री और अपनी सफलता की कहानी लिखें। लिंक डिस्क्रिप्शन में है। प्री एग्जाम ऐप स्मार्ट तैयारी का साथी।
करो कैलकुलेट। ये क्वेश्चन नंबर 12 है, राइट? कंफर्म करो जरा, तो मैं कॉपी पेस्टिंग में मेरे को इजी पड़ेगा। दिस इज क्वेश्चन नंबर 12, राइट? ओके। ऑन 1st Jan 2005, X draws a bill on Y for 50,000. At maturity, the bill returned dishonored as Y became insolvent. And 40 paise per rupee is recovered from his estate. The amount recovered is 50,000 का 40 पैसे। इसके करेक्ट ऑप्शन में देखो क्या क्या आंसर दिया इन्होंने। 20,000, 30,000, 40 पैसे, नन ऑफ द अबव। आंसर इज 20,000। Okay. On 1st April 2001, Raj draws a bill on Aslam for rupees 60,000 for 2 months. Aslam accepts the bill and sends it to Raj, who got the bill discounted for 58,800. Raj immediately remits rupees 19,600 to Aslam on the due date. Sorry, Aslam. On the due date, Raj, being unable to remit the amount, accepts the bill for 84,000 for 2 months, which is discounted by Aslam for 82,200. Aslam sends 14,800 to Raj out of the same. How much amount of discount will be borne by Raj at the time of 14,800 remittance? A very fantastic question is this. I want you to try. फिर मैं उसको सॉल्व करके बताता हूँ। देखो, ओरिजिनल बिल अमाउंट was 60,000. Original bill amount was 60,000, discounted for 58,800. तो उसमें से उसने 19,600 किसको दे दिया? असलाम को, एंड राज ने बैलेंस रखा। तो 1/3 अमाउंट उसने दे दिया है। तो अभी जितना भी डिस्काउंट था, डिस्काउंट उसमें फर्स्ट राउंड में डिस्काउंट कितना था? 1,200 रुपीज डिस्काउंट था। 1,200 रुपीज डिस्काउंट का था। तो 19,600 का 1/3 मतलब 400 रुपीज का डिस्काउंट असलम ने बेयर किया। 20,000 एंड 39,200 उसने रखा, तो 800 डिस्काउंट उसने बेयर किया। कोई डाउट है किसी को? On the due date, Raj being unable to remit the amount. देखो, राज ने बिल ड्रॉ किया था, राज ने उसका पैसा दिया नहीं।
इसीलिए उसने नया बिल ड्रॉ किया, उसने नया बिल ड्रॉ किया। ध्यान से देखो, नया बिल कितने का था? 84,000 का। ये फेंक दो। नया बिल था 84,000 का, डिस्काउंटेड एट 82,200। तो डिस्काउंट अमाउंट कितना था? डिस्काउंट अमाउंट कितना था? 84,000 माइनस 82,200, 1,800। अभी आगे बोला है, which is discounted by Aslam for 82,200. Aslam sends 14,800 to Raj out of the same. तो अभी यहां पे आप ध्यान से देखो, इसने 14,800 रेमिट किया ऐसा नहीं है। हमको राज का 2/3 हिस्सा रहता है। राज कितना हिस्सा रख रहा है? 2/3 हिस्सा रख रहा है। हमें पहले एग्जाम्पल में भी उसने 2/3 रखा था और असलम ने 1/3 रखा था। तो सिंपल है, 1800 का 2/3 निकालो। 1800 का 2/3 अगर हम निकालेंगे तो 1200 रुपीज डिस्काउंट वो बेयर करेगा। आर यू गेटिंग दिस कंसेप्ट? तो आप चेक करो, 14,800 प्लस 1200 डिस्काउंट का एंड प्लस 40,000 रुपीज पहले बिल का पैसा उसके पास से लिया जाएगा, क्योंकि असलम ने वो बिल ऑनर किया था। तो 14,800 प्लस 1200 प्लस 40,000, 56,000। तो 84,000 इंटू 2 डिवाइडेड बाई 3, आपको 56,000 मिलेगा। आर यू गेटिंग द लॉजिक? आंसर शुड बी 1,200। अभी आप लॉजिक देखो, मैं आपको लॉजिकली एक्सप्लेन करके बताता हूं, ध्यान दो इधर। हाँ, ओके। फर्स्ट बिल, सेकेंड बिल। एक काम करता हूं, मैं उसको उल्टा करता हूं। राज, असलम, टोटल। फर्स्ट बिल, टोटल अमाउंट कितना था? फर्स्ट बिल का टोटल अमाउंट कितना था? इट वाज 60,000। फर्स्ट बिल का टोटल अमाउंट था 60,000। डिस्काउंट ऑफ फर्स्ट बिल, देखो हमको क्या बोला है, उसने 19,800, इट वाज डिस्काउंटेड
और ये डिस्काउंटेड बिल। डिस्काउंट अमाउंट कितना था उसका? हाउ मच द फर्स्ट बिल वाज डिस्काउंटेड फॉर? फर्स्ट बिल वाज डिस्काउंटेड फॉर 58,800. 58,800. So what was the total discount? 1,200. अभी ये 58,800 में से उसने असलम को 19,600 दिया। तो अभी आप कैलकुलेट कर सकते हो उसने कितना दिया। 58,800 में से 19,600 दिया, तो 19,600 अपॉन 58,800 करो, कितना आया? 19,600 into 3 is equal to 58,800. So 1/3 दिया उसको. So it is 1/3 is given to Aslam. तो राज को कितना रहेगा उसमें से? 2/3. तो 39,200 उसको मिला। तो 1,200 का 1/3 400 and 800. तो इसको फर्स्ट बिल में से 40,000 मिला और इसको फर्स्ट बिल में से 20,000 मिला। समझ रहा है? ये फर्स्ट बिल का कहानी। अभी ये फर्स्ट बिल क्या हो गया? राज वॉज अनेबल टू ऑनर। अभी एक्सेप्ट किसने किया था फर्स्ट बिल, मुझको बताओ। हु हैड एक्सेप्टेड द फर्स्ट बिल? हु हैज एक्सेप्टेड द फर्स्ट बिल? असलम। असलम ने एक्सेप्ट किया था। तो ड्यू डेट को बैंक किसके पास से पैसा मांगने वाला है? ड्यू डेट को बैंक विल आस्क द मनी फ्रॉम असलम। अभी बैंक असलम के पास से पैसा मांगने वाला है, असलम ऑनर कर देता है 60,000, मगर इसमें से 40,000 राज के पास था, बराबर है? तो राज के पास से 40,000 लेने का था, बट ही वॉज अनेबल टू गिव। तो राज ने क्या किया? एक बिल एक्सेप्ट किया। राज एक्सेप्ट्स अ बिल, तो सेकेंड बिल ड्रॉ हो गया। बिल सेकेंड इज ड्रॉन फॉर 84,000, राइट? उसमें से that bill was discounted. For how much? The bill was discounted for 82,200. The bill was discounted for 82,200. So total discount value was 1,800. अभी इसमें से 2/3 राज को जाना चाहिए। 82,200 into 2 divided by 3, तो 54,800 राज को जाना चाहिए। 54,800 and 1,200, and total will be 56,000, 2/3, और 1/3 इसको जाना चाहिए, तो 1/3 is 28,000, 84,000 का 1/3, और डिस्काउंट इज 600, तो 27,400 वो उसके पास होता है। अभी यहाँ पे देखो क्या बोला है कि उसने राज को कितना पैसा ट्रांसफर किया? हाउ मच ही ट्रांसफर्ड? 14,800, 14,800। तो अभी देखो, ध्यान से देखो, 56,000 उसका हिस्सा था,
उसमें से 1200 डिस्काउंट का उसने माइनस किया, क्योंकि पहला बिल का डिस्काउंट का पैसा असलम को बेयर करना पड़ा था, और उसने कुछ दिया नहीं था। डिस्काउंट का पैसा माइनस हो गया। अभी 54,800 was the net amount payable, right? उसने पहले बिल का 40,000 नहीं दिया था, देखो, तो उसमें से उसने 40,000 माइनस कर दिया और बैलेंस दूसरे बिल का 14,800 उसको दे दिया। आर यू गेटिंग दिस कंसेप्ट? अभी समझा सबको? ओके, नेक्स्ट, ये अकोमोडेशन बिल का पार्ट आ गया। क्वेश्चन नंबर 14, Mr. B sold goods worth rupees 25,000 to N. N immediately accepted a bill on 1st November 2001, payable after 2 months. B discounted this bill at at 18% per annum on 15th November. On the due date, N failed to discharge the bill. The amount on the due date, N failed to discharge the bill. Later on, N became insolvent. 50 paise is recovered from N's estate. How much amount of bad debts will be recorded in the books of B? Simple है, कितना confusion किया है? The question is very straight, but कितना complicated way पे बताया है? 50% पैसा आया नहीं है, तो सिंपल अमाउंट है 12,500। हाँ, अगर नोटिंग चार्जेस रहता तो वो ऐड होके 25% निकलता। अगर यहाँ पे नोटिंग चार्जेस दिया नहीं है तो डायरेक्ट बिल का 25% बैड डेट हो गया। नेक्स्ट, क्वेश्चन नंबर 15, M sold goods worth rupees 50,000 to N on 1st October 2005. N immediately accepted a bill of 3 months on the due date and requested that the bill be renewed for a fresh period of 3 months and agreed to pay interest at 18% per annum in cash. How much interest will be paid in cash by N? So 50,000 का 18% divided by 12 multiplied by 3 months. So I got is 2250. Do you get that amount? Next, question number 16. On 1st Jan 2005, X draws a bill on Y for 30,000. At maturity, Y requested X to draw fresh bill for 2 months together with interest.
and noting charges ₹100. Balance interest amount will be interest amount ही calculate करना है 30,000 into 12 divided by 12 multiplied by 2. I got is 600. Do you get that? क्या गलत? 600 is wrong. Answer 600 is wrong. किसी को कोई अलग आंसर आया? Answer is 602 rupees. देखो, what was the bill amount? 30,000. What was the noting charge? ₹100. So total amount receivable from Y is 30,100 into 12% divided by 12 multiplied by 2, 602. 30,100 का निकालेंगे हम. Have you understood that?